बिल्कुल देखें, पहली गेम जो है वो हम बहुत अच्छे तरीके से जीते थे और आई थिंक 5-6 बॉल्स पहले हम 7 बॉल जीत के थे, लेकिन आज जो है वो कह सकते हैं कि इट्स क्लैप्स इन बैटिंग। बट ये है कि बैठेंगे, इस पे डिस्कस करेंगे कि हम जो है वो किस तरह आगे लेके चलते हैं। कि एक मैच बिल्कुल जो है वो हम आउट क्लास कर दिया और एक मैच में बिल्कुल जो है वो हमारी बैटिंग लाइनअप उस तरह नहीं हुई। देयर इज़ अ कपल ऑफ सॉफ्ट डिसमिसल्स जिनकी वजह से जो है वो हमारी पार्टनरशिप उस तरह बिल्ड नहीं हो पाई। लेकिन यह है कि रिमेनिंग गेम्स में जो है ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। अच्छा हसन, आपकी जैसे परफॉर्मेंस चल रही है, बड़ा तासुब दिया जा रहा है कि लोग सिर्फ पाकिस्तान में ही और पीएसएल में परफॉर्मेंस करते हैं। ऐसी परफॉर्मेंस आप दे रहे हैं, इसके बाद तो आप समझते हैं कि आगे दोबारा पाकिस्तान टीम में कमबैक के लिए? देखिए सर, मेरा काम है परफॉर्मेंस देना, और अभी नेशनल T20 खेला था, वहाँ पे भी बेस्ट बॉलर हुआ हूँ इंजरी के बाद वापस आके। और उसके बाद यहाँ पे भी 2 मैच जो है, पहला मैच इतना अच्छा नहीं था गया, लेकिन आज जो है वो जो चीज़ें मैं करना चाह रहा था उसी जगह पे उसी राइट एरिया में बॉलिंग हुई है। तो परफॉर्मेंस देंगे तो इंशाल्लाह खेलेंगे सर। अभी स्टिल हम जवान हैं और खेलना चाहते हैं, और मैं तो यही सोच लेके जो है अपनी प्रैक्टिस करता हूँ कि मैंने कम बैक करना है। बाकी इट्स अप टू द मैनेजमेंट सिलेक्शन कमेटी के, वो क्या सोचते हैं। हसन, जेम्स विंस और डेविड वॉर्नर के बाद ट्वेंटी विकेट्स लास्ट वीक पहले ओवर के अंदर गिर गई थी, उसके बाद ऐसा लगा कि बिल्कुल जो है टीम जिनके ऊपर रिलाय कर रही थी और बिल्कुल ऑफ कलर नजर आई। तो आप क्या समझते हैं वही आज के मैच का टर्निंग पॉइंट था? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है वो हमारे फॉरनर जो फॉरनर हैं उनके ऊपर ही जो है हम रिलाई कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही बात नहीं। अगर आपने ये क्वेश्चन किया है तो अगर मैं ऐसे ही समझाऊँ तो देखिए, खुश दिल ने मेरी पिछले मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और एज आई सेड अर्लियर के हमारी पार्टनरशिप उस तरह बिल्ड हुई, विकेट्स पे ऊपर विकेट्स, विकेट्स के ऊपर विकेट्स जो है वो गिरती गई हैं, जो कि हमें वहाँ पे पार्टनरशिप होनी चाहिए थी। इवन जैसे टीम सैफर्ड और शान मसूद में थोड़ी सी पार्टनरशिप हुई थी, लेकिन फिर अगेन वही 200 डिसमिसल दोबारा फिर से हो गए बैक टू बैक। तो जब बैक टू बैक आपके विकेट्स गिरते हैं तो प्रेशर आपके ऊपर आता है। सो इस चीज़ को जो है वो हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरह बैक टू बैक विकेट्स गिरते हैं और उसके बाद किस तरह जो है पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं। हसन, बड़ी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। नेशनल T20 कप में बेस्ट बॉलर बन के आए, 2 मैचेस में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन एक आदमी बुरा जाता है तो वो किंग कर लेगा वाला टैग आपकी जान नहीं छोड़ता, पीछे होता है, कहीं ना कहीं हर्ट होता है कि यार परफॉर्मेंस है और ये वाला टैग पीछे नहीं छोड़ रहा। अभी मैं एज के या कैरियर के उस स्टेज पे हूँ कि मुझे कोई चीज़ जो है वो हर्ट नहीं करती। सो आई हैव बीन थ्रू इन दीज डिफ़िकल्ट टाइम, और मैंने सारी चीज़ें जो वो देख ली हुई हैं। हम लोगों ने उसको किंग बनाया है और हम लोग ही उसके पीछे हैं। तो अगर मेरे कहने से कि भाई किंग नहीं करेगा, तो अगर वो रन्स कर लेगा तो मैं कह देता हूँ कि भाई वो किंग नहीं करेगा। बट पास में बहुत कुछ हो चुका हुआ है जिसने, मैं आपको खोल के दिखा सकता हूँ कि किसने किसको क्या क्या बोला हुआ है, और हमारा ही वो प्रोडक्ट है यार, हम लोगों ही हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, किंग कर लेगा, तो सर मैं माजरत चाहता हूँ सबसे। और मेरी स्टेटमेंट वही है कि ही इज़ द बेस्ट, ही वॉज द बेस्ट एंड ही विल कम आउट दिस डिफ़िकल्ट टाइम। तो हम लोगों का यही होता है कि हम लोग जो है वो थोड़े ज़्यादा पीछे लग जाते हैं, तो थोड़ा रिलैक्स रहा करें ना यार। हसन, मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स कराची किंग्स के पास जो है वो नबी आपके पास स्क्वाड में मौजूद है, लेकिन वो अब तक खेले नहीं है। तो आप नहीं समझते कि एक रेगुलर स्पिनर कराची किंग मिस कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि हमने देखा रिशाद ने भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की और जो है वो कराची किंग की 3 विकेटें वहाँ से जो है ना गिर गई, मेन विकेटें उन्होंने ली। उसके बाद हसन शाहीन के बाद उन्होंने जो है वो मिडिल ओवर में जहाँ से थोड़ा चांस था तो ली। आप नहीं समझते कि मिडिल ओवर में एक स्पिनर मिस कराची कर रहा है? देखिए, बिल्कुल ये भी अर्ली स्टेज है टूर्नामेंट की, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि हमारा बेस्ट कम्बिनेशन क्या बन सकता है। तो हमने कोशिश यही की थी कि हमारे दोनों ऑलराउंडर हैं, जैसे अरफात बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए आ रहे थे डोमेस्टिक में, लास्ट ईयर भी उन्होंने कराची के लिए बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। तो अरफात को हम एज ए जो है वो मेन बॉलर ले रहे हैं, और खुशदिल जो है वो एज ए ऑलराउंडर खेल रहे हैं। इवन के अरफात भी, वो भी ऑलराउंडर हैं। बट लेट्स सी जो अपकमिंग मैचेस हैं उनमें हम किस तरह का जो है वो अपना कम्बिनेशन बनाते हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हमें ज़रूरत है मिडल ऑर्डर में एक स्पिनर्स खिलाने की, तो वी डेफिनेटली हम जो है वो नबी भाई का सोचेंगे। हसन, पूछना ये चाहूँगा, आ रही है आवाज़ वैसे भी? जी जी,
हसन, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पीएसएल में आप वहाँ व्यास के साथ सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर भी ज्वाइन बन गए, मोस्ट स्कोर विकेट बॉल पे भी आप शाहीन जावेदी के साथ ज्वाइन हो गए। तो पहले तो अपनी 10 साल की पीएसएल जर्नी को थोड़ा सा बताइए, पेशावर से इस्लामाबाद से कराची, कैसा ओवरऑल जर्नी रही? और उसके साथ अब शाहीन जावेदी भी रिकॉर्ड करीब आए, तो अब है कि टूर्नामेंट के एंड तक इस रिकॉर्ड को मजबूती से अपने नाम के साथ जोड़े रखते हैं, उतना ही एक्सेप्टेंस परफॉर्म करते हैं? देखिए, जर्नी जो है वो 10 साल की बहुत खूबसूरत जर्नी रही है और मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखी हैं। एज एमर्जिंग प्लेयर मैं आया था पेशावर ज़ल्मी के लिए 5 साल उनके लिए खेला, फिर 3 साल इस्लामाबाद के लिए, भी 2 साल से कराची में हूँ। तो मेरी हमेशा कोशिश यही होती है कि जहाँ पे भी मौका मिले टीम के लिए परफॉर्मेंस दूँ और जहाँ पे टीम को ज़रूरत है वहाँ पे स्टैंड आउट करूँ। रिगार्डिंग रिकॉर्ड्स की बात, वहाबे के साथ मैंने बहुत इंजॉय किया बॉलिंग, उनसे सीखा बहुत है। तो मेरे ख्याल से इस हेल्दी कंपटीशन के जो है वो बैक टू बैक हर किसी की क्लोज विकटें हैं। आई डोंट नो, मुझे आइडिया नहीं है। आप ही कह रहे हैं कि रिकॉर्ड जो है वो बराबर हो गया है। तो अगर शाहीन आ रहे हैं, अगर वो अच्छी बॉलिंग करेंगे तो उनके ऊपर विकेट चले जाएंगे, अगर मैं करूँगा तो मेरी चली जाएंगी। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है कि आपका एक हेल्दी कंपटीशन जो है वो बना रहता है। हसन, पहला मैच कराची में बड़ा जबरदस्त था, दूसरा मैच भी आज हुआ, लेकिन पहले मैच में जिस तरीके से क्राउड ना होने के बराबर था, आज थोड़ा बेहतर हुआ। 3 मैचेस अभी कराची किंग्स के बाकी हैं। मायूसी हो रही है, कराची वाले बिल्कुल भी नहीं आ रहे कराची किंग्स के मैच, लेकिन कुछ पैगाम देना चाहिए क्योंकि अभी आपके 3 मैचेस बाकी हैं कराची में। देखिए, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले मैंने बोला था कि लोग जो हैं वो अच्छी क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, तो उसके ऊपर भी मीम्स बना दिए गए हैं कि आईपीएल और पीएसएल। लोग जो है वो देखना चाहते हैं अच्छी क्रिकेट। अगर पीएसएल में अच्छी क्रिकेट होगी, जिस तरह का हमारा पहला मैच हुआ है, तो अगर उस तरह की क्रिकेट होगी तो लोग डेफिनेटली आएंगे। और अब मेरे ख्याल से जो पहले मैच की वजह से ही आज क्राउड ज़्यादा आया है। तो अगर हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो क्राउड बिल्कुल एंगेज होगा। और कराची का जो एक सुनने में मसला आ रहा है कि उनके बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, बहुत दूर दूर से उनको चल के आना पड़ता है। आई डोंट नो, लेकिन सुनने में तो यही आता है कि ये है। बट रिक्वेस्ट ऑब्वियसली मुझे लगता है अब रिक्वेस्ट की जगह पे जो है हमें अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। वही रिक्वेस्ट होगी कि अच्छा परफॉर्म करें और जो क्राउड है उनको एंगेज करें। हसन, सवाल तो मेरा भी यही था, लेकिन इसको तो चलो छोड़ो परा फिर। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूँ। अच्छा, ठीक। कराची किंग्स की मैनेजमेंट को भी आप समझते हैं कि कुछ करना चाहिए फैंस को स्टेडियम में लाने के लिए, जिस तरह से पेशावर ज़ल्मी है, लाहौर कलंदर्स के लोग करते हैं? आई थिंक पहले अगर हम शुरू में देखें तो कोई ना कोई फ्रेंचाइज जो है वो कोई ना कोई इवेंट्स कराती हैं, टैलेंट हंट प्रोग्राम जो है वो चलाते थे। बट जब से कोविड आया उसके बाद जो है इनका फोकस जो है ना फ्रेंचाइज का उस तरह नहीं रहा। तो डेफिनेटली करना चाहिए। हम लोग बहुत इमोशनली अटैच हैं क्रिकेट के साथ। हम लोगों के पास एक ही स्पोर्ट्स है जो हाईएस्ट लेवल पे, और हम सब लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं जब भी मैचेस होते हैं। और पीएसएल जो है वो हम कहते तो हैं ये हमारा ब्रांड है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो 10 साल पूरे हो गए हुए हैं। और इस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए। बट आई थिंक बेटर है कि अगर आप ये ओनर से क्वेश्चन करें या जो पीसीबी है उनके जो लोग हैं उनसे क्वेश्चन करें। मेरे ख्याल से तो एक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा हुआ है, मैंने गुजरांवाला में लाहौर के अंदर के ट्रायल जो हैं वो देखे हुए हैं, तो मुझे पता है कितना क्रेज़ होता है इस चीज़ का। तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। हसन, लास्ट वीक आपके टीम ओनर सलमान इकबाल ने बड़ा ओपनली कहा कि इस सीजन हम जिसको वाइस कैप्टन बनाएंगे वो नेक्स्ट सीजन हमारा कैप्टन होगा। तो आपको कोई ऐसी बात कम्युनिकेट की गई है? मुझे तो नहीं की गई, लेकिन मुझे उन्होंने बुला के ये बोला था कि आप हमारी टीम के लीडर हैं, आप चाहे कप्तान हैं या नहीं हैं, आप फास्ट बॉलिंग के लीडर हैं, तो हम आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप रहे हैं, तो आपको कोई आप ये कबूल करेंगे। तो आई सेड कि इट्स ऑनर फॉर मी कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइज का वाइस कैप्टन बनना और जो है लीड करना मेरे लिए बाइसे फ़ख्र है। और लेट्स सी, अभी अगला सीज़न बहुत दूर है, अभी हमें यहाँ पे परफॉर्मेंस देनी है। वी डोंट नो, अगले साल वैसे भी 1 प्लेयर या 2 प्लेयर आप रिटेन करने हैं, ये भी पॉलिसी है। तो लेट्स सी के सीज़न के बाद नेक्स्ट सीज़न में क्या होता है, क्या टीम बनती है, क्या पिक होती हैं, तो ये तो तभी देखा जाएगा। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी तो मैं जो है उसको पूरी कोशिश करूँगा अच्छे तरीके से निभाऊँ। लास्ट क्वेश्चन पे आपने भी कहा कि हम बहुत जल्दी पीछे पड़ जाते हैं, रिलैक्स करना चाहिए, अपने स्टार्स के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। एक प्लेयर जिसने पाकिस्तान को इतना सर्व किया हो, एक छोटी सी गलती हो या एक पूरी फॉर्म आती है, उस पर तनकीद के निश्चर पड़ जाते, तो उस प्लेयर के जहन में क्या चल रहा होता है? आप पे भी एक वक्त ऐसा आया था जब एक कैच ड्रॉप हुआ और सब आप पिछली कारकर्दगी भूल गए। तो एक प्लेयर किस तरह अपने आप को गिरने से बचाता है इस तमाम सूरत हाल में?
दोस्त यार हर कोई अभी सोशल मीडिया पे जाए वहाँ भी तनकीद हो रही, तो कैसे अपने आप को मोटिवेट रखना, अपने आप के मोरल को किस तरह बुलंद रखना चाहिए और आप किस तरह इसको रखते हैं? फैज़ान भाई देखें, क्रिटिसाइज़ करना बुरा नहीं है अगर आप राइट टू द पॉइंट क्रिटिसाइज़ करें। मैंने अगर कैट ड्रॉप किया, यू हैव ऑल द राइट्स, आप मुझे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, कुछ भी आपका जो दिल करता है वो करें। बट जब आप पर्सनल क्रिटिसाइज़ करते हैं, जब आप फैमिलीज़ को लेके आते हैं, जब आप पर्सनल चीज़ें जो हैं वो करते हैं, तो वहाँ पे अगर कोई प्लेयर ये बोलेगा कि मुझे हर्ट नहीं होता तो वो झूठ बोल रहा है। मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, हर्ट होता है, बिल्कुल होता है, बट एज ए प्रोफेशनल हमें जो है वो अपनी चीज़ों को हमने खुद ही कंट्रोल करना है। बहुत दफ़ा ऐसे हो चुका हुआ है कि एक बंदा पीछे खड़े होकर आपको माँ बहन की गालियाँ दे रहा होता है, बट यू कांट डू एनीथिंग, राइट। अभी जैसे रिसेंटली न्यूजीलैंड में हुआ है, मैंने नियाजी से भी बात की है और खुशदिल से भी कहता है यार वो उसने बहुत अब्यूज़ कर दिया है, तो इसलिए हमारा जो वो आपने एक फ़ोटो देखी होगी खुशदिल की, तो उनका रिएक्शन बाहर आया है। तो आप क्रिटिसाइज़ करें, हर किसी को हक है, और हम लोग जिस स्टेज पे हैं वहाँ पे क्रिटिसाइज़ होगा। हम लोग ग्लैमर में हैं, हम लोग जो है वो कैमरेज 24 घंटे हमारे ऊपर रहते हैं। अगर आप खाना कहीं पे खाना चले जाएं तो आपको मोबाइल जो हैं वो फॉलोज़ करते हैं, तो ऐसी चीज़ें होंगी। एज ए प्रोफेशनल आपने उन चीज़ों से किस तरह कम ओवर करना है, बेस्ट रहे आप जाके अपनी प्रैक्टिस करें, आप अच्छी परफॉर्मेंस करने की कोशिश करें, अपनी जो लाइफ है उसको आप वो डिसिप्लिन रखें। आप इन चीज़ों के बेस्ट वे है कि आप परफॉर्मेंस दें और जो है वो आप मुंह बंद करा सकते हैं, अदरवाइज़ तो ये चीज़ें होंगी, और ये हमसे थोड़ी हो रही है, इससे पहले भी होती हुई आ रही हैं। Thank you very much. Yeah, really, obviously positive performances, and I think obviously we took the learnings from the first game. We knew we weren't up to scratch and exactly our kind of game plan. So the last two games we played beautifully. I thought, especially we lost the toss in Rawalpindi, then set a really good total. As a batting unit, understood that we need partnerships, especially on these grounds. You can't just go in from ball one and smack it. So it's about, batsmanship, but also identifying that you need to bat in partnerships here, because it's very hard to stop two guys who are in batting well. So from a batting point of view, that's been really obviously positive. 200 scores, guys are going on. In 2020 cricket, you want guys who are getting 70 plus scores, and obviously Daryl Mitchell and Fucker have done that beautifully. And then it allows the guys like myself, Sikandar, to come in and really try and ice it at the end. So yeah, from a batting point of view, I think we identified that and played really nicely. And then bowling wise, look, again, we identified that we bowled way too full. I think you look around the world, if you bowl 8 to 9 metre length consistently and you're nice and straight with your lines, it's very hard to get away, from a batting unit point of view. So it's going back to the real basics of the game and doing them better, because we know the talent we've got in our dressing room is there. And a word obviously on Rishad. I think to come in as a young boy, to come in and bowl the way he has, it's the first time I've seen him bowl live and play with him, and he's been incredibly impressive. And I think wrist spin in this format of the game is so key, because there's a wicket-taking option throughout the middle of the innings. So he's been outstanding. And obviously the last time I was here, we had Rashid Khan throughout those middle overs, and I think that really helps the pace bowling attack that we have as well. So I'm sorry for rambling on, but I think he's been a brilliant impact, and great to see our pace guys back to their full potential as well. Sam, you smacked Mohammad Amir in the last match. The way you played against him, he is considered one of the prominent bowlers in Pakistan. Tell us about that. And obviously the bowling in your squad, especially you speaking some Urdu words, having some fun. Tell us something about that as well. How your experience or your chance of speaking Urdu with your teammates. Yeah. So firstly, obviously Amir, I have huge respect for Amir. His career is phenomenal, and he's a great bowler. He obviously got me out in the ILT20 final not too long ago, and we always have great battles. I played with him in the CPL, and I know his skill. So some days we had a joke about it in the gym this morning actually, because sometimes he gets the better of me, sometimes I get the better of him. It's always a really good competition, and we have that mutual respect between each other. And yeah, I enjoy those kind of competitions. So it was just my day at Rawalpindi, and I'm sure next time he'll be fired up for it. So I have to be ready for that as well. So like I said, I respect him. And obviously,
Every team I go into, I want to give as much as I can to the team. Whether I'm scoring runs or not that's not the most important thing. For you as a teammate, you have to be a good teammate. So I think just trying to talk to the guys in their language and learn a little bit more every single time. I think one, it breaks the ice between guys, especially guys who don't speak much English as well. So I think it just builds that bridge and lets me get to know people as well. But also, the whole environment, Lahore Qalandar's family, it is a family and we all look after each other. That's something that really struck me 2 years ago, and it's exactly the same. Samin, Shaheen, they run an amazing environment, and it's such a key part to this franchise, and it really is a family. I know it gets spoken about a lot everywhere, but actually they accomplish that and really value that. So it's something that's very special about this franchise. Okay, Sam, Suraj Kumar from Past. Your team, Lahore Qalandars, looks very dangerous. They are clicking every boxes. Which other team do you feel like that team can give you really tough time when you go back to Lahore or Sultan? Every team played two matches and they all are there on the table. So which other team do you feel like this team is the one who can beat you? Look, I think firstly, I believe that if we play our best cricket, we are the best team. I believe that. We've got all bases covered. We're a really strong team, but that's why we have to focus on ourselves. But that's not to say I have huge respect for every single team. It's very early on in the tournament, so there's a lot of cricket left to be played, and every single team have superstars. You look at all the lineups. So today, look, it's 2020 cricket at the end of the day. You're going to have days like Karachi did today, and we played well, and other days that sometimes, like the first game for us, it was a tough day for us. So T20 cricket happens like that. It's about staying consistent, and as long as you know your game plan as a team and as individuals, and you stay consistent, I think the best teams consistently, if they pick their same team with only one or two tweaks here or there, and stick with their best side and maintain that emotional control, they're the best teams. When I think teams are searching too much and changing the team every single time, I think that's when problems arise, and certainly as players, that's when you lose confidence. So we like I said, we just focus on ourselves and we respect every single team in the competition because it's a very strong competition, we know that, but we believe in ourselves. Sam, I have a couple of questions. First, you are part of Nava in the first ever season of PSL. Now PSL completed 10 years. How you feel? You played throughout the world. A lot of people talk about PSL in different ways, started in UAE, now in Pakistan, all the things. And the second one, recently you were part of the final of City Thunders, and you were the very capital winners. You were winner of the 100. You win PSL with Lahore Qalandars. So, this is part of a lot of champions team. So, just talk us through this thing also. So firstly, your first question about playing in the first PSL. It was my first opportunity in franchise cricket, so I thank the PSL a huge amount for that opportunity, and Dean Jones obviously is not with us now, but he was coach that first year, and Islamabad gave me that opportunity. I spoke with Rehan a while back, and he's a good guy as well, so really thankful for that opportunity. It makes me feel old now you mention it, so it's amazing how time flies, especially in your cricket career. It really does go fast, so amazing experience, and it's amazing to see how Pakistani cricket has continued to evolve and continued to kind of improve. And amazing to be back playing in Pakistan. Obviously that was in Dubai, and you feel the passion here for the game in this great country. So so it's brilliant to be back playing cricket in Pakistan. In terms of your second question, look, I'm very proud of all the teams I've been a part of. The Big Bash last year when I was with Brisbane Heat as well. I think I've won 9 titles now in T20 cricket, and look, that's what I'm here for. I want to win titles. That's the most important thing, and being a part of that. That's why we get out of bed in the morning. Personal achievements aren't important, and it's about actually those team achievements. So it comes back to the environment,
as a player, it's very important, I think, especially when you get older, you understand that it's about giving to the environment and it's not all about yourself. It's how do you make the people around you better, how do you make the team better. So yeah, that's something that is very important for me, but it's just great to be a part of a winning culture. And look, it's about character at the end of the day. You need people all pushing in the same direction. You need to be smart. You need to play as a team. It's pretty simple, but it's amazing how many teams or individuals get it wrong. So yeah, like I said, I think you need to build the team accordingly and get all the ingredients there, and I feel like we have that at Lahore this year, but hopefully we can kind of get over the line again, because like I said, that's what I'm here for. I want to win tournaments. One last question from Shazad. You have played over 300 T20s, and with PSL being in its 10th edition, I want to know where do you rate the PSL as a league amongst all the leagues you have played? You have played IPL, you have played almost all the franchise leagues. So where do you rate PSL standard-wise, and especially if we compare it with neighboring league IPL? How do you compare these two leagues, especially standard-wise and crowds involvement? You want me to say something silly, don't you? I want your honest opinion. No, look, I think the great thing about cricket, is that everywhere you go around the world is you have to adapt to conditions. So the conditions of playing in Pakistan compared to India, compared to Australia in the Big Bash, England, you have to adapt as a player, and it makes you a lot better cricketer to be able to be successful in every single competition. I think, there's no doubt, and I think everyone in world cricket knows that Pakistan has a huge amount of talent. The talent is never undoubted here. I think sometimes it's more about the structured thinking, the thinking. We were talking about it. I was talking about it with Harris, and I said, actually, if you keep it simple, you bowl 150 kilometers an hour, you keep it very, very simple, you're one of the best bowlers in the world. It's when you try and do too much, I think, as players and as individuals, then actually that's when the results don't come. So the talent is always here. You just have to look at this competition. I think it's hard to rank all the competitions around the world, and look, I think it's hard to look past the IPL as the premier competition. I think that's probably pretty obvious, but every other competition is probably just behind. In England we're trying to do the same, like the PSL, to be the second best competition in the world. The Big Bash are trying to do the same. And like I said, I think it's very hard to compare, because each different competition presents different challenges and different things for players. So I love it. I enjoy this. Something that's very special about this job, and I feel very grateful for, is that I get to travel the world playing cricket and hopefully putting smiles on people's faces and entertainment. And yeah, I wouldn't trade this job for anything.